So now we are starting here with our last minute workshop. Okay, so here it is, the last minute paper 2 with Faiz. Have your essentials ready to get notes. Hopefully the paper 1 workshop helped you a lot, and I have received very nice feedback about that. People were very thankful, and the tactics that we discussed in the class and the workshop really helped them out. So here we are hoping that this workshop may add you, may help you too with your paper. When we talk about paper 2, we do have two passages there, passage 1 and passage 2. Passage 1 is a fictional passage, factual passage, and in factual passage you have content points, summary, and opinions. For content points, there will be total of 12 marks. For summary, there will be total of 10 marks, and for opinion, there will be total of 3 marks. So for that, it makes 25. The total marks for the paper is 25 here. So this is the marking criteria. Everybody knows about this. That's why मैं ज़्यादा depth में नहीं जाऊँगा उन बातों के जो बाकी लोगों को already पता है. The people already know. Passage 2 is a fictional passage in which we have literal questions, inferential questions, and writer's craft. These three type of questions are there in passage 2: literal, inferential, and writer's craft. There is no any other kind of question over there. So we'll be discussing all of them too. Moving forward very swiftly because we don't have much time and there's a lot of work to do here. Passage 1, reading for ideas. Okay. Passage 1, reading for ideas. The very important thing in the question, when we discuss the passage, the very important thing in the question is the question itself. What our students do, they just go for the lines given, the spaces given, and they start solving it. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट लाइंस पे जाते हैं, पैसेज सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, वहां से जो वर्ड्स मिलते हैं, चीजें मिलती हैं, वो लिख देते हैं. That's it, without even looking for the question. ये मतलब why the examiner has given this much material here if this is not useful? If this material is not useful, why the examiner has mentioned this? So this is a useful material, guys, and how to use them, I'll let you know. See, identify and write down the benefits and drawbacks of major sporting events. So the passage is about major sporting events, and we have to see for two things. Number 1, benefits, and number 2, drawbacks. This is an exemplary question, and we are not solving this passage. हम solve नहीं करेंगे. This is an exemplary question to understand the question. As outlined in the passage, use material from the whole passage. At this stage, you do not need to use your own words. Acha. From the whole passage, again, very important thing. And at this stage, you do not need to use your own words. Do not need to use your own words means that you can lift up. When it says you do not need to use your own word, that means you can lift up the things. Use note form, very easy. By saying note form, it means that everything that you are writing must be in bullets. Note forms means everything you are writing in here must be having bullets, must be divided into bullet points. Okay. We are not discussing particular passage. We cannot answer the question from particular passage. We'll be discussing general tactics and techniques of the paper. Yeah, Arman, if you do a little bit in your own words, that will be considered okay. That's not an issue. Obviously, that is right. That is right. That's not an issue. Okay, now to help you get started, the first point in each section of the notes is done for you. You may find it helpful to use bullet points when listing the content points. You'll be awarded up to 12 marks for the content points. Very easy. So this is the question. First thing is that our passage will be divided into two parts. Here are the two parts. The first, benefits. The first part is benefit, and the second part is drawback. These are the two parts in which our passage is divided. Very simple idea first. Bilal Shah will be explaining about the bullet points. Obviously, Daud, we can use that. बिल्कुल Bilal, bullet points पे लिखना बेटे. Exactly. Shankar, exactly 12 marks with 12 points. 1 mark for 1 point.
One mark for 1 point you'll be giving. Okay. Coming forward. Now this is our first thing. You have to put the key terms in your mind here. The key terms here are very important. If you are not using the key terms, then it means you will be going in vain. All of the passage you'll be doing will be going in vain because you'll be expecting things that are not necessary. So you have to keep this key term in your mind. If this key term in your mind is there, that means जब आप passage scan कर रहे होगे, so you will be scanning again and again for this key term. For example, benefits of major sporting events. That means जब मैं जाऊंगा passage को पढ़ने and I'll be reading the passage, so I'll be keeping that in mind कि मैंने हर sentence को पढ़ते वक्त सिर्फ ये देखना है कि is there any benefit of major sporting event mentioned or not. अगर वहां पर benefit of major sporting event mention है, so that I'll take as a content point, else not, otherwise not. Okay. Now then, sense of national pride, you can have the marker scheme for here. That's not an issue. We'll be discussing that in ECR. इसको हम दोबारा ECR में discuss करेंगे. बस ये जो couple of things are there that I need to tell you, I'm telling you. Second और हमारी key term होगी drawbacks. Drawbacks is our major key term. So the passage, it means the passage is divided into benefits, number one, and number two, the drawbacks of major sporting events. Major sporting events is the theme that our passage have. This is the main theme of our passage, major sporting events. But with that, we have to divide the passage into drawbacks, and obviously benefits. So is it clear here? Any problem? Yes. Okay, I'm having the question in the chat. Okay, so thank you, Mahmood. Okay, sorry, there are a lot of people in the waiting room. We haven't allowed them. That's why a lot of messages are coming. Okay, I've just admitted all of them. Sorry to keep you guys waiting because we have already started our workshop. That's why there was no one to add you up, because some of my team members are not here today with me. They're having their Eid holidays and they are enjoying Eid. हर बंदा हमारी तरह blessed नहीं होता ना कि ईद के दिन भी हमारा पेपर हो. So, well, this is all we discussed. The passage will be divided into two parts. The major theme of the passage is sporting events. Okay. So the major theme of the passage is sporting events, and with the sporting events, the passage is divided into benefits and drawbacks. That's it. Moving forward. Once again, let me know if my voice is clear. Okay, just give a thumb up if my voice is clear. Give a thumb up. Okay, Mahmood, I've got a question. Mahmood is saying to, sir, what if we write 15 points in total and there are 3 wrong? Will those 3 points help? No, Mahmood, that will not help because the examiner will be checking the right points only. Farik, that is more nice. That would be better and insisted if the points do not cross a line. If a point comes in line, that's good. See, actually, Fatik, the thing is that the examiner knows. उससे पता है कि इतनी बात एक line में आ जाएगी. So that's why he has given you 1 line for each point. So there is no need to go to another line. Do not to acquire another line for 1 point. Okay. Done. Any other questions? Okay, questions are coming here. Mahmood, thank you very much. Yes, Yasha will be dealing with that. We'll be talking about that. हम करते हैं इस बारे में बात बेटे. See, here are some major points I have deducted from the mark scheme and the from examining report both, and I have displayed them here. These are because obviously for you to go through all the ECRs and mark scheme would be very difficult because ये बहुत सारा detailed documentation होती है. So I have extracted some of the points here और मैंने list up कर दिए. For example, first thing, examples supporting the main point are unnecessary and should be avoided. Examples
supporting the main points are unnecessary and should be avoided. Obviously, content point के अंदर exemplification cannot be the part of the content point. Exemplification has to be separate from that. Yes, Abbas, you can write that, obviously. And now see what happens. Obviously, exemplification is not a part of content point. It should be avoided. Second, if such parts are used, then they must be clearly defined. They must be clearly defined. Must be clearly defined with other words. For example, if in a content point you're including examples, although it is advised not to include examples, but if you are including examples in a content point, so that is beneficial for you to mention that this is an example by using the words like, for example, for instance, such as, like. These words can be used for putting examples. Words of text or note form can be used. Words of text can be used means you can use exact words from the text. It means that you can do the lift ups. Lift ups are no issue. No marks for example, लेकिन examples के कोई marks नहीं मिलेंगे आपको if you are writing examples and you are thinking that you'll be getting mark for that. ऐसा नहीं होगा. Details in the main points must be avoided. Details, they are talking about the details. What kind of details they are talking about? They're talking about specification. For example, when we talk about general criteria, and with that general we take a piece of a specific one, so that is also counts as an example. For example, they say that people are more happy when they have an animal with them to enjoy. This is a journal part. But if they say again, the content point continues, okay, content point continues, people having cats are feel more emotionally balanced as they feel that they have someone to live with. Now, this is the example of cat is a specific point. The thing of an animal, the point of an animal is general point, and the talk about the cat is a specific point. So we will exclude that specific point and only write the general point. This is how this thing works. This is unnecessary details. For example, if you remember the passage of silk, in silk they said that silk the growth, the market in silk business silk becomes so expensive, the trade in silk becomes so extensive that the trade route between South Asia and the West was named as Silk Route. तो obviously ये पूरा sentence है, but it is not important कि complete sentence content point हो. Sentence का कोई part भी content point हो सकता है, a minor part. Actually बेटे ये जो passage 1 के 25 marks है ना, ये वो marks हैं जो कि examiner free में दे रहा है. These are the marks in a platter. अगर ये भी हम lose कर जाए तो it's very bad of us, क्योंकि इसमें कुछ अपनी तरफ से करना नहीं है. कंटेंट पॉइंट है जो पैसेज में से निकाल के लिखना है, समरी कंटेंट पॉइंट से लिखनी है, ओपिनियन भी पैसेज में से लिखना है, एंड दे आर वेरी इजी. अगर तुम्हें सिर्फ प्रॉपर टेक्निक पता है, the proper technique for the proper thing to do, that's it. You can do with it, you can do the content points and you can get your marks and go home. That's it. कोई मसला नहीं इतना बड़ा. हाँ, अगर प्रॉपर टेक्निक नहीं पता तो in that case sometimes ये problematic हो जाता है. So I would recommend to not lose marks in passage 1 अगर तुम passage 1 marks lose नहीं करते. So that would be a big haul to you. That would be a big success to you if you're not losing marks in passage 1. Okay, I'm having questions here. I'll be taking little questions. So I have a question about P1 narrative. But Ishal, we can do this later on. You can send it personally to me on the WhatsApp. The queries about the previous paper, I can deal with that. Okay. Ashim, which point 1? Okay, examples 1. I'll be explaining that. Yes, Sumit, I will try to do that. Yes, Dal, it is allowed. Lalsha, this is not a case about quality and quantity here. No, Ayan, that would not be very good idea to have 2 points in one line. No, don't do that. Okay, Adil says, sir. Okay, yes. Priya, more than 600. Yes, obviously you can write more than 600 points. In that case, if the confirm, I'll be telling you. Wait, I'll make it more clear. Okay, Isra said, can I write 500 points on the first part? Isra, you can do that, but see what happens mostly.
Okay, let me go back here. Let me go back here. Mostly is what happens, and guys, when we write points is 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 lines given. That means we can write up to 8 content points. Up now in that 8, for example, when the examiner is checking the points, 1 is right, 2 is wrong, 3 is right, 4 is right, 5 is wrong, 6 is right, 7 is right, 8 is right. So in that case, the examiner will be counting the points as 1. The examiner will be counted as 1, 2, 3, 4, 5, 6. And in that case, he'll be awarding you 6 points for that. He'll be excluding the points which are not right, and he'll be awarding you points for the content points that are right. He'll award you marks for that. So don't need to worry about this. Okay. Any other question about this? Okay, Hashim, I'm telling you. Hashim, wait. Okay. In that case, see, Raza, the thing is that the major you can score, the most you can score is 12. That's it. आदिल, इतना बड़ा पॉइंट कभी होता ही नहीं है. देखो, ऑब्वियसली जब एग्जामिनर ने पेपर बनाया, ही नोस के एक लाइन में पॉइंट आ जाएगा. इतना लंबा पॉइंट होता ही नहीं है जो 2 लाइंस में चले जाए. हाँ, एक्सेप्शन टू दैट कि किसी की राइटिंग बहुत ज्यादा बड़ी हो, तो इन दैट केस ही कैन गो टू सेकंड लाइन. वरना 1 लाइन में मोस्टली आपका आ जाता है, कोई ऐसा मसला होता नहीं. और अगर आप थोड़ा सा इधर उधर करके भी उसको लिखते हैं, बस मार्जिन से बाहर ना जाए, तो दैट्स ओके. उस पर कोई मार्क्स डिडक्शन होती नहीं है ऐसी खास. फातिक, अननेसेसरी डिटेल्स तो बहुत सारी हो सकती हैं. अननेसेसरी डिटेल्स देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा, अभी मैंने एग्जांपल भी दिया अननेसेसरी डिटेल की. एंड अदर देन दैट, हियर आई हैव रिटन एग्जांपल सपोर्टिंग द मेन पॉइंट आर अननेसेसरी. सो एग्जांपल्स वहां पे क्लियरली मेंशन होती हैं, उसमें लिखा होता है फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, इस तरह के वर्ड्स पैसेज में लिखे होते हैं. बाय दैट वी कैन नो कि ये यहाँ पर एग्जांपल्स हैं एंड दिस इज अननेसेसरी टू इंक्लूड. सी, द मेन थिंग, मैं सबके सवालों का एक ही जवाब है और वो मैं जवाब यहाँ पर देता हूँ. यशा, बिल्कुल, यू आर एग्जैक्टली राइट. Obviously, Hashim, that's not an issue. Yes, Aisha, I'm telling you about that. अगर ऐसा कोई केस आ जाए कि पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए वो सपोर्टिव हो और वो जरूरी हो, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, वो मैं अभी आगे उसी के बारे में बता रहा हूँ. नाउ सी गाइस, ये सारी बातें, इन सारी बातों का एक ही जवाब है और वो बड़ा आसान सा जवाब है. एंड द आंसर टू ऑल ऑफ दीज क्वेरीज आर दैट हियर. मैंने सबसे पहले ये बात बताई कि व्हेन यू आर सिलेक्टिंग योर पॉइंट्स, यहाँ पर जाने से पहले जस्ट गो फॉर दिस, सॉरी, यहां पर जाने से पहले जस्ट गो फॉर दिस हेडिंग. यहां पर ये हेडिंग पढ़ना बहुत जरूरी है. एंड यू हैव टू कीप दिस हेडिंग इन योर माइंड व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर योर कंटेंट पॉइंट. जब पैसेज पे जाके कंटेंट पॉइंट सर्च करो, तो ये याद रखो कि बेनिफिट्स, 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 अगेन एंड अगेन बेनिफिट्स. एक एक लाइन पढ़ते जाओ, एक एक पार्ट पढ़ते जाओ सेंटेंस का. समटाइम्स द सेंटेंस कैन बी अ कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस के 2 पार्ट भी हो सकते हैं. सो एक एक पार्ट पढ़ो. हो सकता है 2 पार्ट्स में एक पार्ट कंटेंट पॉइंट हो, एक पार्ट कंटेंट पॉइंट ना हो. सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ अ कंटेंट पॉइंट. एंड द डेफिनेशन ऑफ अ कंटेंट पॉइंट इज दैट के बेनिफिट सर्च करने. डेफिनेशन ये है कि वो पॉइंट जो आपकी कीवर्ड को, दिस इज कॉल्ड द कीवर्ड, वो पॉइंट जो आपके कीवर्ड को एग्री करे, कीवर्ड को सेकंड करे, दैट इज योर कंटेंट पॉइंट. यहाँ पर हमारा कीवर्ड है बेनिफिट. तो हम सिर्फ पैसेज में ये देखेंगे कि वो कौन सी लाइंस हैं जो बेनिफिट शो कर रही हैं. बेनिफिट्स के अलावा दुनिया की 1000 बातें बताए, मैं उसे कंटेंट पॉइंट में नहीं लूंगा. मगर अगर वो पॉइंट, कोई सी भी लाइन, एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इफ इट इज शोइंग बेनिफिट्स, आई विल कंसीडर दैट एज अ पॉइंट. दूसरी बात ये कि अगर तुम्हें लगे कि कोई बात लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग द पैसेज, और पैसेज पढ़ते वक्त यहाँ से यहाँ तक तुमने एक बात पढ़ी, तो के लगा कि जी ये कंटेंट पॉइंट हो सकता है, दिस इज अ कंटेंट पॉइंट, ठीक है, लिख दी. लेकिन तुम्हें ऐसा लगा कि इसके आगे जो बात आ रही है, ये बात भी, दिस थिंग कैन आल्सो काउंट एज अ सपोर्टिव पॉइंट. सो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, you will put that in brackets. That is the use of brackets here. You can put that in brackets. Brackets में होगा ये कि अगर brackets में लिखा होगा and if it is a wrong content point, so the examiner will give you the point for right mark, mark for the right point, and he'll give you 1 mark for that.
अगर ये ब्रैकेट्स लगे हुए तो इन दैट केस, अगर ये ब्रैकेट्स नहीं हुए फॉर एग्जांपल और तुमने डायरेक्टली पॉइंट लिख दिया ऐसे ही, तो इस केस के अंदर रिमेंबर दैट ऑलवेज, अगर इररिलेवेंट डिटेल्स आ गई, ये पॉइंट तो है बट ये पॉइंट नहीं है, ये एक इररिलेवेंट डिटेल है, तो विद ड्यू केस ये पूरा कंटेंट पॉइंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए यू विल बी कैटरिंग नो मार्क्स, द मार्क्स अवॉर्डेड विल बी जीरो बिकॉज irrelevant examples और irrelevant details are included। और वो irrelevant डिटेल क्या होगी? हर वो डिटेल जो बेनिफिट नहीं बता रही वो irrelevant डिटेल है। ओके गाइस, दाऊद राइट मैक्सिमम ऑफ देम, मैक्सिमम ऑफ देम। देखो जब रॉन्ग पे मार्क्स कट ही नहीं रहे तो गो फॉर मैक्सिमम। अगर तुम्हें 8 भी मिल रहे तो तुम्हें 8 लिख दो, कोई इशू नहीं है। ओके बच्चा आयशा, आर यू क्लियर विद द आंसर? रजा तब भी पॉइंट मार्क्स 12 से मिलेंगे ना? यस अहमद, आई हैव डन दैट। हाँ और मार्क मिलेगा डेफिनेटली। आदिल, अगर वो ब्रैकेट वाले एग्जांपल नेसेसरी है ही नहीं और उसको तुम माइनस कर दो तो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे। ओके हसन सेइंग दैट other without bracket, what would be the word mark for the point 11 in bracket and point 11 without bracket? That would be zero, obviously Hassan. Okay, Amal Farooq is saying sir, नहीं बेटे, थोड़ा सा बच्चा, हमने अमाल थोड़ा सा उल्टा करके समझ लिया है। ये बात ये है कि अगर कोई इररिलेवेंट बात है, कोई इररिलेवेंट पॉइंट है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो पॉइंट आपके मेन कंटेंट पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है, फॉर दैट वी यूज ब्रैकेट्स। ओके आयशा, थैंक यू। Ashim, wait, when I'll be going to that slide I'll be explaining that. Obviously there are a lot of people asking questions in the direct chat. I have to answer everyone, Hashim, that's why it's taking time. Yes, Amal done. Amal, are you getting it? Okay, Aisha, Hashim, बेटे हाशिम, जब मैं दोबारा स्लाइड पे जाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा ना पॉइंट को बेटे। Okay, Chima is saying how many maximum points? As much as you want, it's okay. Chima, you can write as much as you want, no issues. Okay, now moving forward, because we don't have much time, paper passage 2 will be taking most of our time. And I would recommend in paper, if you guys have dedicating 45 minutes to this passage, that would be good. Yes, you can write minimum, Muzammil, obviously you need to score 12 points. तो जब 12 स्कोर करने तो मिनिमम तो 12 लिखने पड़ेंगे ना पॉइंट्स बेटे, क्योंकि 12 मार्क की टोटल है, 1 mark for every point. Okay, okay, so by that, moving forward to our next slide. Okay, I'm moving forward. We are just holding the questions here, and I'm moving forward with next slide because we don't have much time. Major of our point time will be taken by passage 2 here. Examples and supporting main point. Hashim, are you saying this point to explain? Do you want this point to be explained? Examples and supporting the main point are unnecessary and should be avoided. बहुत सारी बातें पैसेज में, ओके बहुत सारी बातें पैसेज में इस तरह करके लिखी हुई होती हैं दैट फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, एज इन द केस ऑफ, ये सारी चीजें शो करती हैं कि उसके बाद जो कुछ लिखा हुआ है दैट इज द एग्जांपल टू द कंटेंट पॉइंट, नॉट द मेन कंटेंट पॉइंट। सो बेटा इस केस में ऑब्वियसली यू विल अवॉइड दैट, इस केस में ऑब्वियसली यू विल अवॉइड दैट, और जो मेन पॉइंट है सिर्फ वो लिखोगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड नाउ, we are holding a stop here to the, we are holding the questions here because there is a lot of things to discuss, there are a lot of things to discuss.
Yes, Kalpana, it will give marks on that. अब अली अब्बास, ओवरऑल पैसेज 1 में आपको 45 मिनट्स लगने चाहिए, बिकॉज पैसेज 2 विल टेक मोर ऑफ योर टाइम. हाशिम, अगर वो आपको लगता है यू आर दैट श्योर अबाउट दैट 8, so go for it, no problem. Okay, now details in the main points must be avoided. Brackets may be useful. I have told you already how to use brackets with that. Uses of bullets, I have already explained that. Excessiveness makes it difficult to score. Excessiveness means के just because किसी sentence का कोई एक part content point है, you are just writing the whole sentence, हालांकि वो content point नहीं भी है, so that makes it difficult to score sometimes. बेटे हाशिम, अगर इवनली कर लोगे ना पैसेज को, देखो आप ये समझ नहीं रहे हो कि कंटेंट पॉइंट्स क्यों लिखने होते हैं. आई डोंट नो व्हाई, मे बी द टीचर्स हैवंट एक्सप्लेन्ड दैट. कंटेंट पॉइंट्स क्यों लिखने होते हैं? कंटेंट पॉइंट्स हम इसलिए लिख रहे हैं कि हमें आगे जाके इन पॉइंट्स की समरी लिखनी है. तो जस्ट थिंक फॉर योरसेल्फ, थिंक फॉर योरसेल्फ, इट्स अ थिंग ऑफ अ कॉमन सेंस. थिंक फॉर योरसेल्फ कि अगर मैं 8 पॉइंट्स एक पार्ट में लिखूंगा और 4 दूसरे में लिखूंगा, तो माय समरी वुड बी इम्बैलेंस्ड. ऑब्वियसली इन पॉइंट से फिर मैं आगे समरी बनाऊंगा. जब समरी बनाऊंगा तो समरी तो डिसबैलेंस हो जाएगी ना बेटे, कि 8 पॉइंट एक बात के हैं, दूसरे के सिर्फ 4 हैं. सो कोशिश करो कि अगर 6 मिनिमम हो जाए तो दैट वुड बी बेटर. अगर बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है, नहीं मिल रहा है, तो हालांकि इतनी होती नहीं है, टाइम मैनेजमेंट इज नॉट एन इशू, स्टूडेंट मैनेज कर लेते हैं आसानी से. इन दैट केस यू कैन डू व्हाटएवर यू लाइक. ओके, वी आर होल्डिंग द क्वेश्चंस हियर. Hassan, I'll be answering that when we moving to summaries. Okay, तो हम समरी में चलेंगे बेटे, फिर आंसर करेंगे इसको. Now coming towards the summary. देखो ऑब्वियसली आसान होता है ये कि समरी में मैं भी डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा बेटे. नाउ सी समरी. नाउ यूज योर नोट्स फ्रॉम 1A to write the summary of benefits and drawbacks of major sporting events. पहले ही कह दिया उसने, the first thing here, use your notes from 1A. use your own words as far as possible. Now here comes the main thing. वो चीजें आसान है जो हमने भी डिस्कस किया, मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा रुका भी नहीं हूँ, क्योंकि वो सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है, नथिंग एल्स. अगर तुमने 2 पैसेज आज प्रैक्टिस कर ली प्रॉपर्ली, सो यू विल बी डूइंग गुड इन द पेपर टुमारो बेटे. यूज योर ओन वर्ड्स as far as possible. Keep that in mind. I'll be talking about that. You will be awarded marks for producing a piece of writing which is relevant, number 1, and number 2, well organized and easy to follow. Your summary must be in continuous writing, not note form. Note form का मतलब है कि summary में bullets ना लगे हों ऐसे करके, bulleting ना हो, continuous summary हो. If you want to do paragraphing in the summary, you can do paragraphing in the summary. That's not an issue. You are advised to write between 150 to 180 words, including the 10 words given below. Begin your summary as follows. Now, a benefit of major sporting event is that they generate. Now forward. अब इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट है बहुत, जो समझना बहुत जरूरी है फॉर ऑल ऑफ अस, if we really want to have good grades tomorrow, if we really want to ace this part of the question, this part of the paper. Now see, यहाँ पर समरी में इंकल्जन और एक्सकल्जन में पॉइंट्स नहीं कटते. फॉर एग्जाम्पल, अगर वहाँ कंटेंट पॉइंट में यू हैव लॉस्ट सम मार्क्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर समरी में भी एग्जामिनर कहेगा कि जी आपने वहां पर गलत किया है तो वो यहाँ भी इंक्लूड किए होंगे, तो यहाँ भी मार्क्स काट लो, ऐसा नहीं है. He'll go for the overall idea of the summary and then obviously award that. लेकिन समरी के अंदर ये याद रखना है कि समरी के अंदर आपके जो मार्क्स बन रहे हैं, that is being drawn from 2 things, relevance and coherence. I am discussing that. लेकिन पहले याद रखो बेटे कि जब आप समरी लिख रहे हो तो आपने वही 1A के नोट्स यूज करने हैं, नंबर 1. नंबर 2, you are supposed to use own words as far as possible, only as far as possible. As far as possible लिखने का मतलब बेटे ये होता है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए आप एक नया सिनोनिम लेकर आओगे, ना ही ये नेसेसरी है कि पूरी समरी ही अपने वर्ड्स में हो. एज फार एज पॉसिबल का मतलब है कि ओन वर्ड्स में समरी लिखने से इट बिकम्स मोर हेल्दी एंड इजी टू प्रोड्यूस अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज रेलेवेंट. बातों को रेलेवेंट करने में, बातों को कोहेरेंट करने में, उनमें फ्लुएंसी पैदा करने में, आइडियाज की फ्लुएंसी पैदा करने में ओन वर्ड्स बड़े हेल्पफुल होते हैं. क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम थोड़ी सी मेरी बात को समझने की कोशिश करो, 2 मिनट क्वेश्चन रोकेंगे सब और बात थोड़ी सी सुनेंगे बेटे बच्चा. द थिंग इज दैट पैसेज जो लिखा है ना, पैसेज एक अलग टोन में चल रहा है. इट्स अ फैक्चुअल पैसेज, बहुत लंबा पैसेज अपने टोन में चल रहा है.
उसमें सब कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, सारी सपोर्टिव एग्जांपल, सपोर्टिव आइडियाज, सपोर्टिव कनेक्टिव्स एंड ऑल द